major blocker here is a data warehouse. How to build a complete data warehouse with the data model. Okay. 1 minute, Ganpati, just a minute. Okay. Major blocker here is yes. Hello. yes, Sagar. Yeah. Can you Yes. hear me? Yes, I can hear you, Ganpati. So my interest and my major blocker here is I want to build a complete data warehouse project to fetch the data using ADF, Databricks, again using SQL. Finally, I want to load the data into dimension fact tables. Using My, Azure, right? You are asking. yeah. Yeah. So like, it depends on your project, what technology you are using. So do you wanna also do a ETL process, before creating a dimensions and fact table, or you have already the client's data in your system and you just wanna, do a modeling on top of that. So if I talk about the complete picture of this Azure data engineering, now, so there first you have to do ETL operations, where you clean the things and put it some cleanse data in some layer, and then on top of that layer, you create your data models like dimension fact table, and then you can use via a Python script, or also you can you can dump that data into a data warehouse, and then on top of that you can create your dimensions, fact tables, and so on. Yeah, actually, my exact point here is from the data, how can I figure which is the, if I want to create a fact table, from the source data, how can I find out which is the fact column, which is the dimension column, which need No, see, what is dimension? What is dimension tables? Mm, Dimension table is a one table where you'll have single entities data. Let's say if I'm talking about country, dimension dim underscore country, dimension country. So yeah. there we will be having a country specific information like country name, country के अंदर क्या आता है, is that we have country, then we have states, right? State under we have cities, then district, and so on. So वो वाला data आपके पास होगा in dimension table. In fact table will have some metrics present over here. Let's say I'm finding out how much revenue I earned last month. So there I will keep some summation, average, count, and all the stuff, right? So Okay. those things we'll keep in the fact tables. Oh, okay. And one more major blocker in our project is actually a functional knowledge. I am working in a utilities project. Sorry, which project? Utilities project. Utilities, okay. Yeah. We are working on the power project, electric power project. So our seniors has built the entire project. We worked on it on the ETL part. But while coming to the reporting layer, majorly these stakeholders will come and ask us some questions, and they will ask us to modify in the dimension layer or fact layer or any Power BI reports on top of it. If any bug is there in the Power BI report, they will ask us to rectify that. So that's when we'll get so many doubts in the functional knowledge area. We don't know the functional knowledge. So is there any way to master the functional knowledge, like for example, insurance domain, utilities domain, You telecom have domain? no. So it is. I mean, you have to ask your company or the organization to give you a training on your domain. Like, see, let's say my company is Amazon, right? So it doesn't mean that Amazon is doing the same. I mean, doing the business in the same way how Myntra is doing, Oh, okay. right? That is that is Amazon business, ना? अब Ah, आप अपना बिजनेस कर रहे हो सेटअप, आपकी mhm. शॉप है, तो वहां पे आप कुछ अपना आइडिया लगाओगे, डजंट मीन कि आप सेम टू सेम ही यूज करोगे मेरी मेथोडोलॉजी और आपकी मेथोडोलॉजी। सबका अलग अलग अप्रोच होगा। तो कंपनीज में क्या होता है, जो भी आप मतलब दैट्स ट्रू, लाइक इफ यू आर इन अ बैंक सेक्टर और इफ यू आर इन सप्लाई चेन सेक्टर और एनी अदर सेक्टर, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पता पता होना ही चाहिए आपको कि इन ये डोमेन पे
काम कैसे किया जाता है, क्योंकि कुछ चीज तो कॉमन ही होती है ना, नॉट एवरीथिंग इज डिफरेंट, एटलीस्ट some part is common in the domain side. But if you are working for your client, you should ask your client to give you a training on your business only. Then only you will understand कि reporting अगर they are asking something, no, do these changes. So you can relate कि हाँ why they have asked. Because you do not know ना, इतना बड़ा बिजनेस को आप नहीं समझ पाओगे कभी भी, मतलब टाइम लगेगा बहुत, इतनी जल्दी तो आप नहीं समझ सकते किसी का बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनीज का, कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये वो. Oh, okay. Okay. I thought that some books will be there where we can read and understand नो द the. बेसिक, आई मीन अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट ये दिस अमेजॉन बिजनेस, तो उस पे Mhm. आपको ये थोड़ा सा आइडिया तो होगा ऑनलाइन बिजनेस कैसे काम करते हैं. पहले एक रिटेलर होता है, ठीक है, वहां से सामान उठाया जाता है. एक तरीका तो वो होता है कि डायरेक्ट, मतलब जैसे मेरी शॉप है, मैंने क्या बोला अमेजोन को कि भाई तुम मेरा पार्टनर बन जाओ, हम तुम आपके पार्टनर बन जाते हैं. देन व्हाट हाँ दे विल डू, व्हेन एवर समवन परचेज समथिंग, सो हम्म, वो बंदा आएगा मेरे यहाँ से उठा के ले जाएगा सामान. हाँ एंड हाँ अगर अमेजोन ऐसा भी करता है कि उनका खुद का डेटा वेयर हाउस होता है, राइट, दे ऑल्सो हाँ बाय some items on bulk and they put it over there. तो वो वाला मेथड भी होता है, और भी हो सकते हैं बहुत अलग मेथड भी होते हैं वो, है ना, जैसे भी वो बिजनेस कर रहे हैं. अब दोज थिंग्स आई डोंट थिंक सो कि वो, ये तो मतलब कंपनी स्पेसिफिक हो गया, राइट, कि आपकी कंपनी कैसे काम करती है. तो आप ये तो नहीं, ये तो कोई नहीं बताएगा आपको. मतलब आपकी कंपनी के ही बंदे ही बता पाएंगे कि वो बिजनेस कैसे करते हैं. या वो आई आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे मिलेगा पूरा. मीन 100% यू विल नॉट गेट फ्रॉम एनी बुक और मे बी फ्रॉम एनी ऑनलाइन रिसोर्स. ठीक है, समझ आया, समझ, थैंक यू। ये ओके. कुछ ऐसा चीज़ है ना जो प्रोजेक्ट में रह के एक्सपीरियंस से पता लगता है कि बिजनेस कैसे काम करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, गणपति, आई मीन ऐसा नहीं है कि ये किसी को नहीं आता जल्दी. ये है ही ऐसी चीज, मतलब. वो तो है। हाँ, अनटिल अनलेस आपने उस स्पेसिफिक चीज की पढ़ाई करी हो, है ना, स्टडी आपने, मतलब हम लोगों ने दूसरी करी है ना, हम एमबीए में नहीं किया हम लोगों ने. हमको नहीं पता भाई बिजनेस कैसे काम होता है, राइट, कैसे हाँ बड़े बड़े कंपनी से कैसे काम होता है. अगर जो एमबीए वाले बंदे होंगे या दूसरी डोमेन के जो बंदे होंगे वो जल्दी समझ पाएंगे उस चीज़ को. अब आप हो इंजीनियर, अब हमें समझना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है. आप बड़े बड़े भी, आप अपने सीनियर्स को भी देखोगे, उनको भी नहीं आता होगा 100% बिजनेस, इवन दो यो मैनेजर्स और बड़े बड़े लीडर्स जो भी होते हैं, क्योंकि है ही इतनी बड़ी कंपनी, तो आप कैसे सब चीज़ जान जाओगे. ठीक है, समझ आया, थैंक यू, थैंक है सुरजीत, हेलो सर। यू हैव एनी क्वेश्चन? ये जब हम लोग एक स्टोरेज बनाते हैं, जैसे जेन 2 कंटेनर बनाए, उसमें लेफ्ट में देखोगे तो क्यू रहता है, क्यू क्यू स्टोरेज, भी होता है, टेबल्स भी होती हैं, फाइल्स भी होते हैं, राइट. टेबल्स, फाइल्स। हाँ, तो हम्म. उन सब का यूज का क्या है? कंटेनर्स तो क्यू ठीक है। क्यू यूज होता है स्ट्रीमिंग पे, फास्ट होता है. क्यू क्यू हम यूज कर, जैसे क्यू जो जैसे काम करता है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर में जो पहले रिक्वेस्ट आएगी उसी को भेजा जाएगा, राइट, आगे. आप बैंक में जाते हो फीफो। करने, हाँ, फीफो, यस, वही वाला मेथड वहां पे लगता है. तो स्ट्रीमिंग में होता है कि जो मैसेज पहले आया है आप उसी को तो भेजोगे ना आगे. ये तो या ना कि पीछे लाइन लगा बंदा आप भेज दो, वहां पे यूज किया जाता है. मतलब मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है, क्योंकि हम लोग, मतलब बहुत सी कंपनी ये इवेंट बेस, सॉरी, इवेंट हब यूज नहीं करती है, वो लोग काफका ज्यादा यूज करते हैं ये स्ट्रीमिंग के लिए. तो मुझे हैंड्स ऑन तो नहीं है सर, बट हाँ उसके लिए यूज किया जाता है क्यू. एंड फाइल्स टेबल्स, आई एम नॉट श्योर कि, आई गेस टेबल्स जो नो सीक्वल होता है उसके लिए आई थिंक टेबल्स यूज करते हैं, बट पक्का नहीं मालूम, आई डोंट नॉट नो कि क्यों यूज करते हैं. एडब्ल्यूएस में काम किया है क्या? नो नो, एडब्ल्यूएस पर नहीं. एनीथिंग, एनीथिंग एल्स अजित? ये जो कोर्स है इसमें वो
रीडर रीड स्ट्रीम राइट स्ट्रीम वाला है ना, ये क्या कहते हैं इसको, ऑटो ऑटो लोडर। लोडर। ये आने से पहले चीजें, हाँ, मतलब कैसे लोड करते थे, मर्ज ये सब यूज होता था ना। आप मर्ज भी उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अदरवाइज हम्म। आप क्या मेटा डेटा टेबल बनाओगे एक, हम्म। उसमें आप बताओगे कि ये प्रोसेस हो चुका था, है ना, आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे फिर से। वो मेथड्स लगते थे वहाँ पे, अभी भी लगते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये सब यूज़ करो ऑटो लोडर, क्योंकि सिंस डेटाबेस ने निकाला है, अच्छा फीचर है, इसको यूज़ किया जाए, है ना। तो पहले लोग ऐसे यूज़ करते हैं, स्टिल कंपनीज आर यूजिंग द सेम वे, हाँ, बिकॉज और सी दिस हैपेंस ना कि अभी वी आर यूजिंग डेटाबेस, ओके, सो वी हैव दिस फीचर, मे बी डेटाबेस ने कॉस्ट बढ़ा दी अपनी फ्यूचर में, एंड द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड दैट वन, दैट प्राइस। हम्म। तो फिर हमें मूव करना पड़ेगा, राइट। एंड इफ वी डू नॉट फॉलो अस आर्किटेक्चर, मतलब जो सब काम कर रहे हैं वो आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ भी यूज कर लेंगे कहीं पे भी, देन वी मे फेस इशू व्हाइल माइग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग कोड टू सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि वहाँ पे वर्क फ्लो का ऑप्शन दे दिया डेटाबेस वालों ने, ठीक है। अभी बंदे जाएंगे, वर्क फ्लो बनाएंगे मस्त मस्त, कल को 2 साल बाद कंपनी ने बोला भाई पैसा ज़्यादा लग रहा है, डेटाबेस वाले बहुत ले रहे हैं, इसे हटाना है। तो क्या करेगा हम्म। बंदा, कंपनी क्या करेगी, बाहर के बंदों को सोर्स करेगी, है ना, इंटर्न्स हायर किए जाएंगे, उनसे ये काम कराया जाएगा कि भैया कॉप ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना है। तो इट्स हम्म। बेटर हर चीज़ नहीं यूज़ करो, मतलब जो भी, मतलब एक अगर कोई एक वर्क स्पेस है, जैसे कि आप लॉजिक ऐप से, आप लोग को पता होगा लॉजिक ऐप यूज़ किया जाता है, हर कोई लॉजिक ऐप जगह जैसी बात पे यूज़ किया जा रहा है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्या? अगर मेल भेजने हैं तो पाइथन स्क्रिप्ट से मेल नहीं भेज सकते क्या? भेजे जा सकते हैं यूजिंग एसएमटीपी लाइब्रेरी, अटैचमेंट भी भेजे जा सकते हैं। हम लॉजिक ऐप क्यों यूज़ कर रहे हैं फालतू में? कल को अगर कंपनी ने स्विच मारा, पेवट किया, तो क्या करोगे? तो ये सब चीज़ें ना, मतलब जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कोई भी, तो ये भी हमेशा सोच देख के चलो कि मतलब क्या इसकी ज़रूरत है भी इस एक्स्ट्रा लेयर की, क्या हम उसको एक ही लेयर में नहीं कर दें, तो आपका काम बचेगा ना आगे। और ये रियल टाइम चीज़ है, मतलब मेरे किसी बंदे ने मेरे को ये सेम चीज़ बोली, जब मैंने उनसे पूछा कि वाई यू आर यूजिंग पाई, आपकी कंपनी में पाइसपार्क ही क्यों कराया जा रहा है, स्पार्क से इक्वल क्यों नहीं लिखा जा रहा है? देन दे सेड दिस थिंग कि कल को कंपनी अगर मूव करती है डेटाबेस से, तो हमारे पास एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो है, हमें पता है कि हम्म। सबने पाइसपार्क पे ही कोड लिखा है, तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे जहाँ पे पाइसपार्क सपोर्टेड होगी। अब हो सकता है किसी ने स्काला भी वहाँ पे छाप के रखा हुआ है, किसी ने कुछ और भी रखा हुआ है, वो नहीं पता ना, फिर उनको ये सब देखना पड़ेगा कि भाई 4-5 चीज़ें अवेलेबल हैं एक किसी प्लेटफॉर्म पे, तभी मैं मूव करूँ, अदरवाइज फेल होंगी चीज़ें, प्रोजेक्ट फेल हो सके, तो इसलिए होता है वो। डेटा ब्रिक्स का सर्टिफिकेशन क्या है, क्या कोई डेटा इंजीनियर एसोसिएट इन सब? डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, विच वन, सॉरी? डेटा ब्रिक्स जो प्रोवाइड द करता लेक है वो लेक हाउस, $200, नॉट लेक लेक हाउस, हाउस फंडामेंटल्स, वो that is very fundamental. You can कामों learn में। it from, I mean, हाँ, I mean, you can learn it from from a website ही, though I could say. मे, मेरी कंपनी वाले कोर्स कर रहे हैं ये डेटा इंजीनियर एसोसिएट, वो $200 वाला एग्जाम है ना, वो देने के लिए। So I don't, I mean, see, if your company is asking you कि complete this program or this certificate, then you should do. Otherwise, you may face a issue, in your company, existing company. Otherwise, if you wanna give by yourself, then I would say कि you can neglect or you can ignore this thing. If you have a हम्म। good knowledge, then company will hire you. But if your company only is telling you, keep forcing you कि hey Surajit, go and do this exam and all, तो आपको करना पड़ेगा, you should do that. Does product based companies ask for these certifications? Sorry? Does product based companies It ask for depends. It these? depends on company. I mean, Micros. I guess we have. I have some friends in Microsoft. They also upload the certification over their LinkedIn profile, Hmm. and many company does not. It depends on company क्या follow कर रही है, like what they are looking out. If they are looking out for someone who has a practical knowledge or the certificate knowledge, it totally depends on the company to company.
Anything else, Sujit? Nope. Okay. Hey SK, hey Ratnakar, hello Krishna, hello Keval. Yeah. Yeah, you can go ahead, SK, or if Krishna, if you wanna. Yeah, hi Ask. Sagar. Good evening. This is Krishna here. Hi Krishna. Good to see you this live session. I was just browsing my LinkedIn and I saw your live stream. So I just joined. So my profile is Sagar. I am a DBA with 14 years experience. Okay. So I'm just looking out to change to data engineering stream. Mm-hmm. Just looking out all the stuff, and people were saying like maybe you need to learn languages of Python, SQL, and ETL, maybe at the basics level, and then you can start with any course online. They are suggesting like that. So I would suggest, as you said, that you are DBA, right? Currently. Correct. So you might have already known what is SQL and how we can manage all the databases or data warehouses, if I'm not wrong. Yeah, we do work at the basic SQL, Sagar. We are not into total functions because I'm a ERP DBA. Maybe you know about Oracle apps. Mm-hmm. So we are into totally into the support, not into the development stuff. So installation maybe related to the cloud infrastructure as a code a little bit, and Okay. So, like Krishna, what you should do, first you should clear your all the basics plus advanced knowledge in SQL, since you already aware some of the SQL as of today, right? So it would be better, or it would be easier for you if you start with SQL, so that you will also get some interest, while learning. Otherwise you may be getting demotivated, or something like that. So start with that. Then you can switch to Python is very important language today's to to be a data engineer, or to be any other engineer in the IT industry. Apart from this, once you are done with that, you should start with the big data technology. Either you can choose for Apache Spark, or if you want to go for the legacy system, then you should ideally you should start from Hadoop. Just have a basic understanding of Hadoop, how the Hadoop works, what is Hive, matlab, just a basic thing, not more than that, and then switch to Apache Spark. At least if you know all these three things in details, since you have a big experience, right? 14 years of experience, and if you just cover the basics, I would say maybe you will face a difficulty while giving an interview. Correct. So I should say ki do not go for the quantities, go with the quality. So just cover 2-3 topics in deep, and like as I said, SQL, then Python, Spark, and also you can cover data modeling part in that, and then data warehousing concept in that in deep, very deep. Then you are good to go. I'm 90% sure you're good to go. Apart from this, if you want to learn something new, and if you want to learn Azure cloud, or AWS cloud, or any other cloud, then you can also learn those things. great. Yeah, thanks, Sagar. Thanks a lot. Yeah. Yeah. Hi, Shweb. Hello, SK. If you wanna ask, you can ask anything. Hi, Sagar. Hi. As I see in your LinkedIn profile, you're working for MailSec, right? Sorry, who's this? Shoaib, right? Myself, yes. Sir. Yeah. Hi. So, how much DSA, whether DSA is required for that? For data engineer, DSA is not much required, but also it depends on the company to company. I had given interview in Google 1 year back, 1 or 1.5 years back. First round was DSA, total DSA.
And there were many companies who did not ask me any of the questions from DSA. Like they asked me a programming coding questions in Python, but they did not ask much in DSA. नहीं, apart from Mang companies में दूसरों की बात कर. No. But they will give you some problem statement in that, where you have to write your logics in Python, mostly in Python, not in any other language. And maybe we have Surajit over here. He can guide you more since, he currently switched a company. Surajit, if you wanna, just tell. For a general discussion, right? Thanks, Sagar. So, Shoaib, if at all you can brief about your background, right? Probably I can guide you better. I am from the data analyst part of which, with 4 years of experience. Previously, I have worked for a product-based company as a senior data engineer. Predominantly, I worked as a with visualization tools. So, if at all you are looking for a data engineer, right? Any tier 3 company apart from product-based companies, the preliminary things they will be asking is SQL and a bit of Python with Pandas as framework. Couple of questions, that's it. Okay. As of now, I'm working in Azure Data Factory. So in future, I'm thinking to switch. So that's why I asked whether DSA is mandatory in order to prepare for that. No, as long as you're not looking for a data scientist role, right, wherein statistics or ML will be an integral part of the framework of the company culture, you won't be asked for DSA questions. Okay. But you should, as you said, Sagar, but you should know at least the basic, what is link service, what is queue, what is stack, till stack. okay. If you also know BFS, sorry, not BFS, the tree, binary tree, then would be great. I mean, you just have to know the what we can say theory part at least, not the practical, but at least you should know. Any good resources, Sagar and Surjit, to learn DSA? Can you suggest? Actually, there are a couple of websites available over the internet, Geeks for Geeks. There we have couple of websites over there. You can, just go and learn a lot from there. Even though I'm also planning to launch a course on the same, using Python programming language, maybe in month of June, not in month of May. Maybe you can also take that course in future if you feel it's good. Yeah, actually, yeah, go ahead. Apart from DSA, अक्सर ये Spark scenario based questions company पूछते हैं या DSA पर ज़्यादा focus करते हैं? No, DSA is just for to understand your programming skills, whether you are clear with the concepts or not. Apart from this, they will switch to the data engineering stuff only. They'll ask SQL questions, more SQL questions, more Apache Spark questions if you're in Apache Spark background, and then they may ask you regarding the your architecture, how the project is in your company and what is the end-to-end flow and what is your day-to-day work in that. And if you've done any POC in your company, so those kind of questions they may ask you. Okay. तुम लोग DSA पे कम ध्यान दो यार. Hello. Hi, Sagar. Yeah, Keval, hi. Keval here. Yes, hi, Keval. I have 4 years of experience in technical support, means infra level. I have experience in Active Directory server and network part, as well as AWS and Azure. How can you move from data engineer? Please, can you guide? Yes, Keval, sure. Like since, as I already said, I mean, to get into this domain, you should know the Python language. At least the basic stuff of Python. What is list, what is tuple, how you initiate a loop or iterate the something, then what is OOPS concept in that, and how you can create a module functions, and till then it's okay. And then you should be good in SQL, like 90% SQL you should know if you are someone who is very experienced in the field. And apart from this, then you should know Apache Spark, at least Apache Spark, because nowadays everyone is using Apache Spark. No one is using Hadoop. People are using Hadoop, but that is not very big priority for them. But
almost many companies using Apache Spark nowadays. So focus on that. And ADF, Apache Spark, sir. Sorry for interrupt. ADF or Apache Spark, both are different or no? sorry, who's this? Cable here. Acha, sorry. Yeah. Okay. So no, ADF is something different. It is a ETL tool where Okay. you source the data or do some ETL operations like Yes. changing column names and Yes. other stuff you can do in ADF. But Apache Spark is we can say is a framework, I mean, where you can process your data in a distributed fashion. So Okay. you will not have a single machine in that. You will have a multiple machines, like 5 to 6 machines you have it, and you will process the data in a distributed way so that the process will be faster. Okay. So we have, I mean, so in Azure, we have a workspace called Azure Databricks. Okay, so Azure Databricks is built on top of Apache Spark only. So there you do not need to manage the things. No, so this thing will be handled by the company the Databricks company, and there you can directly write your scripts or run your data or process your data and so on. Thank you, Sagar. Sagar, you have any course regarding data engineering? You can, I mean, if you are someone who is very beginner in that role, then you can follow my YouTube channel videos. There are 2 playlists called ADF, Azure Data Factory, what you asked me. And second one is Azure Databricks and PySpark. There you can learn PySpark and Databricks. After that, if you are comfortable with that videos, if you think like, like you are getting understanding, then you can switch to my course, which I, published recently. That is an end-to-end project course where you'll find out how the project should be and how we create a complete pipeline, like from staging the things, doing ETL operations, publishing something into some layer, and then doing some automation stuff, and then doing a CI/CD, that is a Azure DevOps side, or we can say automation side. But first, I would suggest clear your basic, and then you can switch to this. What is your YouTube channel name, Sagar? It's Geek Coders. Oh, okay. Let me search it. सागर आपने आपका कोर्स उडीमी में नहीं डाला है क्या? Someone asked me on YouTube. Yes, that's myself, Ganapati Sagar. Okay. No. I have a plan, but not yet. Like, I'll make it maybe after some months, but not now. Okay. And Sagar, actually, so since we have discussed about DSA still now, my doubt is, Sagar, I know how to use these loops, functions, and basics of programming language, and basics of DSA also. But I don't know how to use these data structures and algorithms, and how to program using the data structures. See, to be honest, data structure is not being used in any company. We have functions available present, but at least you should know, because sometimes what happens, we may receive a requirement in such a way, there you cannot use any predefined function. The predefined functions are not present. Then what will you do? Then you have to write your own logics, right? Okay. So that's the reason. At least you and if you know the data structure, all those things, then you should know what is happening in the background. Okay. Likewise, if you do not know the architecture, how will you understand the project? Correct. So it's better to know the to know the architecture first, and then switch to your project or any other, or we can say, tool. Okay. Yeah. Hi, Ashish. Yeah, hi, Sagar. Hello. Thanks for accepting the invite. I also messaged you on the LinkedIn yesterday, if you remember. Yes. Okay, so I'm into the data engineering from past 7 to 8 years, I guess. I'm a data architect as of now in my current organization. So my question to you, Sagar, is like, I'm using these
in our project Synapse and Data Factory and Databricks regularly. So I have gone through your videos in a couple of times if I stuck at somewhere. So I find it really very interesting. So from architecture perspective, or see, basic knowledge I have of all these. I have the worked experience on that as well. So my question to you is like, what else I can get from the course that you have uh, recently launched? So Uh, from there, you won't be having a knowledge of architecture. Okay, what you ask me, there you will Mhm. get a knowledge how the pipe, like you said, right? You are using Databricks in your current organization, Correct. Snaps also. So maybe, I Mhm. mean, so in that course, I shown you how we can how we can link all these 4, 5 technologies, or the tools to make one pipeline. Okay, so just the elementary knowledge of how we like get to start working on those services. No, Is no, it no. okay? That is not something like, I shown you the basic. I shown you the, the tip and tricks you can consider. If you're creating some project end to end, then what things you should consider while creating the project. How the access being given to the resources. If you are someone who is building a project and you want to get the data from the source, so your ID, your name should have only the read access on the particular source, right? Not the write access. Mhm. How we can do that? Do you know? So, Many people doesn't know how the process okay. is. So Yeah, I know those I'm things. just telling. I mean, people doesn't know Yeah, because yeah, yeah, these yeah, things of being course. handled, Totally. these things being handled by admins, correct? So Mhm. people doesn't know कि काम कैसे होता है, right? Correct. तो वो सब चीजें हैंडल करके बेसिक भी है एडवांस भी बट दिस इज नॉट बट द कोर्स डजंट कवर एनी आर्किटेक्चर type of thing because what I understood from the course is that these things are already present over YouTube. You can just go and learn it from multiple websites, multiple YouTube channels. So that doesn't make sense to I also repeat the same thing. Yeah, yeah, yeah. I'm asking on that ground, what sort of system we need to build, why this service, why that service, and what are We that particular service bringing so yes so on the. that is covered Okay. like So are you so. planning in near future somewhere something on Databricks building a lake house or a data lake house from the very scratch? Database I planned because many of you have suggested me the same thing. But before that, I am planning to launch a Python course, and then we will launch a ADF where I will be telling you, just I mean, there I will be taking one scenario and I will be Mhm. telling you all the things like, which activity you should use and, something like that. And after that, I will cover database because database is not something, a small thing, to be Correct, honest. correct, It's very correct, vast correct, I thing. know. Yeah. Very, very vast thing. Like even if I am having 5, 6 years of experience, I might not know everything in that. Correct. मतलब Yeah, लोगों that's को why I'm here. Like to be probably honest, you must yeah, have worked on. to be honest, all people doesn't know well Databricks. Okay, not Databricks, I can say Apache Spark. They doesn't know well. Even though sometimes data gets increased, sometimes data get decreased. So how we can handle that? Someone asked me, I guess SK or someone has asked me over the Telegram. So all those things, to be honest, that is a quite difficult. So that's my plan is first I will go by one step by step because people should know first ADF because ADF is something like someone can Correct. learn easily. है ना? So once you are done with that, and then if you are done with Python, SQL is everywhere. Right, there are multiple channels, very good channels present over here there. So that's why I thought like I should not prepare these videos. So after that, I will switch to Azure Databricks. And what I plan, I'll take one scenario first, and I will cover those part, which is not available in the YouTube or someone. So it may take time because थोड़ा सा समझ बनाने में मतलब स्टोरी और वो चीज Yeah. सेटअप करने में टाइम लगता है. Yeah, yeah, fair enough. Saga, Sorry. So yeah, thanks Sagar for this advice. Keep uploading the videos. So people are Sure, coming sure. to me for learning big data. So I'm recommending your channel to all those Thank beginners you. or Thank, whosoever coming to me to watch your channel. Yeah, good stuff, guys. Good stuff, Sagar. Keep working on that. Thank you for your time. thank you. Thank you, Ashish. Bye bye. Thank you so much. and Saga Ganti here. Yes, hi. So
Actually, ADF is always people are saying easy tool to learn. Even if I'll see in the YouTube channels, videos, or Udemy, any online course, offline course, even I have some videos of offline courses also. Some guy has taught some ADF course. Everyone is teaching and explain about the activities only. So what is if activity, what is pipeline activity, until activity, wait activity. No, actually, if I want to build a complete project, end-to-end project using ADF, those are just I things. From past 2 years, I'm working in the ADF only. Those all those activities are 25 to 30% of use only. But why what I am saying is after using those activities also, we have to write some custom code in that activities also to load the data into any from one platform to another platform. For example, I'll say one simple example. I have a source file at the Azure landing area. So from the Azure landing area, what that is blob. From blob to ADLS, I have to copy the data. So while copying the data, I have a file name. File name is XYZ dot D for day, then date is there 2022-03, then some CSV. Okay, so while copying the data into the Azure Delta Lake Gen 2, the file will be copied as it is, but after copying I need to archive that file, right? So at the time of archiving, I need to convert this D.2023-02 or 03 into some folder structure format. First, I need to remove that D from the file format, file name format, and file name also I have to remove. Finally, finally what I have to consider here is 2022-03. Understood. You have to do some changes in your file name, right? So you can do it, right? We have a ADF functions. You can use a split function over there to change the name. Yes. Yeah, that's what my problem is. Actually, how to use those functions efficiently, no one is teaching. I came across around 20-25 courses in the ADF itself. That's true. I mean, no, that's true, Ganpati. But I cannot say ki I have covered it, but somewhat I covered. Regarding the use case, what I have in my project, I covered those things little bit because everything it's not possible to cover in one project, right? So I shown you how you can use these functions and apart from this, see that function list are there, right? So if you suppose you want to add a current time in your folder, then you can use UTC now. Then you can change it to format date time, and then just change the YYMMDD or DDMM by weight, so on, and then put it. So those things are there. I mean, then you have to explore it. This is my problem statement. What is my next step? How should I, do this? No one will tell you 100%, definitely. I mean, no course is made like this, to be honest. And if the course is there, then maybe it is of 50 hours, 100 hours, and the cost will also go a little bit high then. Yes, Sagar. Actually, if I want to learn SQL or Python, whatever course I want, yes, some resources are available. But to explore on these functions, ADF functions, like date functions are there, date functions are there, string functions are there. How to use those functions, at least beginner level also, no one is teaching in the online or offline. So my request You is can refer documentation of Microsoft better in order to explore each and every function. Basic examples are given there. Documentation is the best part. Correct. Yeah, I'm able to understand the documentation part, but I'm unable to implement that to fulfill my requirement. You have to integrate all those functions based upon your requirement. By practicing, you can learn, I think so. Ganapati, have you Like split worked is on there, concat.
how to do all those motions. Okay. Ganapati, do one thing. See, for Huh. building the expressions and all, no? Huh. See, I came from a legacy ETL tool. So my previous technology was SSIS. So there it was very difficult to build the expression. No one knows how to build it. Okay. So thereafter, I moved to ADF. Now here also I am confused how to build the expressions and all. So what you can do now? Hmm. Use the AI if you want to build the expression in short period of time. No. That's not a good way. I would suggest you suppose you created one copy activity, not copy activity. Let's take an example of lookup activity, or maybe Okay. a variable activity. Hmm. You run that variable and go to Okay. the out. Then you go to the output section. You will have that input button or one output button. Go Yes. there, click on that. You will see, because whatever the activities we have, it returns a JSON. Okay, Yes. then you Yeah. have to see, suppose you want to take out value option, then what would be the formula? Let's say we have like we have one root. Inside that we have another node, let's say A, another node, let's say B. So what you have to do, you have to just write that activity name, let's say activity of variable activity, variable, sorry, then you have to use at the rate activity name variable dot root dot A. You will get your value. Okay. Got it. I will try them. You can try it out. Sagar, a question hai, if you don't mind, can I ask? Sure, right? No, I Yes. mind. Yeah. You can ask. You can ask. आपका कोर्स आपके कोर्स के रिव्यू मैंने देखा कि बहुत लोग अबाउट 4.8 स्टार्स ऐसा देख रहे हैं, बहुत खुशी हुआ. नहीं, वो when yes, initially when I was please go ahead. seeing your post, you were Hmm. promoting for unpaid courses, right? आप कह रहे थे YouTube में है, अब जाके सीख लीजिए. Why you are going behind paid courses? So आपने क्यों paid courses start किया, मुझे सवाल है. Yes, you are correct, शोएब. तो इस कोर्स में वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है जो आपको दूसरी यूट्यूब पे मिलेंगी. ओके, मोस्टली आपने and इंटीग्रेशन पार्ट में फोकस किया है मोस्टली. हाँ, इंटीग्रेशन पार्ट, इन नॉट ओनली इंटीग्रेशन, उसमें टिप एंड ट्रिक्स भी हैं जो अगर आपको एक्सपीरियंस है ADF एजोर पे, आप अपनी कंपनी में वो चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. आई एम 90% श्योर. आप अगर सेम टू सेम इम्प्लीमेंट करते हो या उसको थोड़ा सा चेंज करके भी इम्प्लीमेंट करते हो, आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे. क्योंकि अगर आपने मेरे अभी इस रिसेंट वाले पोस्ट भी देखे होंगे, या यहाँ पे 2-3 लोग हैं जिन्होंने कोर्स लेके रखा हुआ है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, सालों से, मैंने उनको यही बोला है कि बेसिक आप कवर करो मेरे यूट्यूब चैनल से जो फ्री है. मैंने इस कोर्स में कुछ भी बेसिक नहीं बताया है, वो चीज़ नहीं बताई है जो आपको दूसरे कोर्सेज में मिलेंगी. कि मैं क्या करूँ, मैं 5-6 घंटे का कोर्स बनाऊँ, उसमें मैं 4 या 5 घंटे पहले बेसिक पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बता दूँ 30 मिनट का, आप बोलो कि वाह भाई मैं सीख गया. ऐसा नहीं होता है. मैंने वो बेसिक चीज़ इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो आप कहीं भी जाके यूट्यूब पे या कोई भी वेबसाइट सीख सकते हो फ्री में. उसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं, और ना वो चीज़ कवर करी गई है. मैंने अगर आप रिसेंट पोस्ट देखोगे, जैसे आप बोल रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, हाँ ठीक है, आपने जो मेरी बात पकड़ी वो सही बात पकड़ी, बट उसमें मैंने वही चीज़ कवर करी है जो अवेलेबल ही नहीं है. और वो हम 90% बोल सकते हैं वो अवेलेबल नहीं है. अभी तक मुझे एक भी शिकायत नहीं मिली इस कोर्स में कि आपने वही सब सेम चीज़ पढ़ाई है. क्योंकि मैं पैसे क्यों लूँ आपसे जो आप फ्री में पढ़ सकते हो? मैं भी क्यों दूंगा किसी को पैसे जो मुझे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा? तो बात ही गलत हो गई ना. मैं आपको बेसिक बेसिक पढ़ा पढ़ा के पढ़ाऊँ वही चीज़ बताता हूँ, 4-5 चीज़ें घुमा घुमा के, आप बोलोगे वाह. तो वो चीज़ कवर नहीं है. आप एक बार मतलब देखो, अगर मैं हमेशा मैंने उस कोर्स में भी मैंने वो वीडियोस डाली हुई है फ्री वाली, कि इफ़ यू डू नॉट नो कि ये क्या है जो डेटा फैक्ट्री है, क्या है जो डेटा ब्रिक्स है, आप उसको देख सकते हो फ्री में. वो हमेशा फ्री रहेंगे, उस पर पैसे नहीं है. क्योंकि कुछ मैंने इसमें अपना 4 इयर्स का एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा आई थिंक कि मुझे फीस चार्ज करनी चाहिए. जी सर, अंडरस्टूड योर पॉइंट. आप ये कहना चाह रहे थे बेसिक के लिए क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो, हाँ, तो फ्री में इसमें पढ़ लो, यस, फॉर इसमें एडवांस थिंग्स यू हैव टू पे. नहीं, नो नो, मतलब ऐसा नहीं है यू हैव टू पे. हाँ. दूसरे बहुत से होंगे जो देखो, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने एक ही कोर्स लिया है,
सही वाला यूडेमी में पहले जब मैं सीखा, ठीक है, मैंने वहाँ से पढ़ाई करी, फिर मैंने यूट्यूब से अपना एक्सपीरियंस ले लेके इधर उधर से मैं सीख गया, ठीक है। मैंने फालतू के 10,000 20,000 रुपये नहीं, किसी को नहीं दिया, ना मैं देने वाला। मैं आप लोग को ये सबको मना करता हूँ, भाई मत दो, ठीक है। बाकी सामने ऊपर है कि देखो आपको देने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से ना, बहुत लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता जल्दी, उनको गाइडेंस चाहिए 1-on-1 वाला, तो आप ले लो। जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव वीडियो है, ठीक है, तो जो भी मतलब आप ऐसे ले सकते हो, बट जो अवेलेबल है, मैं अब आप सोचो ना खुद, मैं आपको वहां पे बताऊं कि इस पार्क में CSV फाइल कैसे रीड करते हैं, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। उस कोर्स में मैं किसी कोर्स में आपको एक लॉन्च करूँ कोर्स में, वो आपको बताऊं, तो वो गलत चीज होगी ना। वही मैं चीज को बढ़ा दूं, 20-30 घंटे कर दूं, 40 घंटे रख दूं, फिर बोलूं कि देखो जॉब भी मिलेगी। मैंने इसमें भी बोला है सबको, मैं आपको अभी मैंने बोला 90% श्योर, 100% आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अब आप सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रहा, मतलब जो भी बंदा ले रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ, मतलब 100% आई कैन नॉट गिव गारंटी ना कि आप ये कोर्स लगा लोगे तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, आप बहुत अच्छे हो जाओगे इस फील्ड में, अनटिल अनलेस यू डू योर मेहनत। आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जी जी, ओके। तो तभी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अब मैं चाहूँ तो मैं लिख दूं कि हाँ देखो 100% जॉब गारंटी, ये वो, देखो ये होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कहीं किसी पे भी नहीं होता है। अब लोग ये नहीं लिखते हैं कि कितना सक्सेस हुआ, लोग लिख रहे हैं कि चलो मैंने कोर्स निकाला, 2 बच्चे निकल गए, तो वो स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। बट रियलिटी में कितने बंदे निकले, 100 में अगर सिर्फ 2 बंदे निकल रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं हुई कोर्स की। सक्सेस तब होती है जब उसमें 80 निकल जाए। रेशो को नहीं लिखता है ये सब चीजें। तो जब भी आप कोर्स ओके ले रहे हो किसी का भी, मेरा लो किसी भी बंदे का, आई एम जस्ट गिविंग माय एक्सपीरियंस, वो भी इससे पूछो कि कितने रेशियो है सक्सेस, तभी तो आप सोचोगे, जज करोगे ना कि हाँ भाई इनका कोर्स अच्छा है, इनका मुझे लेना चाहिए। रेटिंग वेटिंग तो सब ऐसे ही होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो उसमें जी, नहीं है। ओके। So as of now, I have 1.5 years of experience and मुझे SQL, Python, ADF और Databricks अच्छे से आता है. After completing your course, can I expect I can do work for at least 3-4 years experience के काम मैं कर सकता हूँ आपके कोर्स करने के बाद? ये वाला पेड कोर्स बोल रहे हो आप, एंड टू एंड प्रोजेक्ट? हाँ एंड टू एंड पेड कोर्स ही है ना आपने जो बात किया, हम्म एंड टू हम्म एंड. हम्म 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 हाँ वही, हम्म। वो नो करने के बाद. मतलब हाँ, आप जो मैंने आइडियाज लगाए हैं ना, आप उसको देख सकते हो, उसको देख के आप उससे ऊपर अच्छे आइडियाज निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ADF में जी तो अच्छे आइडियाज बताए हैं, मैंने डेटाबेस में भी कुछ अच्छे आइडिया, जो चेक्स होते हैं, डेटा क्वालिटी चेक्स, जो फ्रेमवर्क लगाए जाते हैं बीच में, कि लेट्स से नो आपने क्लेंजिंग करी, यू डू नॉट नो कि आपकी क्लेंजिंग सही हुई है कि नहीं, हाउ विल यू कंपेयर योर डेटा कि ये सही आया डेटा है कि नहीं। उस चीज को मैंने चेक, एक एक फ्रेमवर्क बना दिया है, आपको दिखा दिया, देखो ऐसे फ्रेमवर्क बनता है, इससे हम चेक लगा सकते हैं इफ समथिंग वेंट रॉन्ग इन क्लेंस, so we will not refresh our upcoming layer, we will stop the our pipeline, and then we'll ask my admins और maybe जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे पूछेंगे कि सी योर डेटा इज रॉन्ग, प्लीज वैलिडेट योर डेटा, और जो भी मतलब जो भी आपको सही करना है डेटा वो करो, देन ओनली वी विल रिफ्रेश द डेटा। ऐसे ही मैंने मार्ट में, अब मैंने स्मार्ट में भी कुछ दूसरा चेक लगाया है, दूसरा फ्रेमवर्क बना के दिखाया है। देखो ये फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, जब हम लोग नोटबुक चलाते हैं, उसमें भी मैंने आपको फ्रेमवर्क बना के दिखाया। तो इट्स मोर इनटू कि आप प्रोजेक्ट बनाते कैसे हो, वो चीज़ बताई गई है, ना कि मैंने उसमें ये बताया कि मतलब मैंने कॉन्सेप्ट इतने नहीं बताए हैं। मैंने आज जैसे कि आपको, अगर डेटाबेस में आप काम करते आए हो तो ऑटो लोडर का नाम सुन लिया होगा अभी तक आपने, कि ऑटो लोडर भी एक नाम की चीज़ है डेटाबेस में। तो मैंने ऊपर पर बता दिया कि देखो ये डेटाबेस, ये ऑटो लोडर होता है, इसमें हमें स्कीमा डालना पड़ता है, चेक पॉइंट डालना होता है, अगर ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होता है तो ये स्किप कर जाता है। उसके बाद मैंने ये भी बोला है कि इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, आप जाओ इसको जो भी आपका फिर रिक्वायरमेंट आती है उसके बेस पे आप लिख सकते हो, इतना मैंने बता दिया है। अब उसके अंदर जाके फिर मैं उसको डिटेल में मैंने नहीं बताया, हाँ मैंने इसका यूज केस बता दिया कि किधर क्या करेंगे और कैसे किया जाता है, ये चीज बताइए। आई कैन से कि हाँ, अगर आप उसी चीज को इम्प्लीमेंट करोगे ना, बनाओगे आप, एंड थैंक्स सर. यस यस। ओके सर, थैंक्स. डोंट माइंड नो मैंने नो नो, नहीं सवाल नहीं किया. नहीं, वो बात नहीं है, मेरे से दूसरे लोग ही पूछे, तो मेरा यही है कि देखो जो मैंने जब 4 years का एक्सपीरियंस अपना लगाया है, तो थोड़ा सा चार्ज तो हम भी करेंगे,
मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब वो चीज मैंने ये, बट मैं ये आपको 90% गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें वो चीज Yes, कवर yes. नहीं है जो आपको कहीं और पे मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। भाई मुझे तो कुछ मतलब नहीं है सागर कितने भी पैसे बनाए, Swaraj मुझे ji, सब ना नो तरह नो नो मेरा बस नो खत्म नो नो होने में। वो बात नहीं है। मतलब ठीक है, दूसरों को डाउट होता है, इट्स ओके कि आप पूछो मेरे से, बट मेरा भी वही है कि मैंने जो भी मतलब बताया उसमें शायद सुरजीत आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू अपना, कि शायद उसमें कुछ नया ही आपको दिखा होगा, सेम टू सेम चीज़ें नहीं दिखी होंगी एडीएफ पार्ट में, एटलीस्ट एडीएफ में अभी तक आपने एडीएफ कंप्लीट कर लिया है तो कुछ ना कुछ तो नया जानने को मिला ही होगा कि ऐसे भी किया जा सकता है इस प्रोसेस को। तो वही चीज कवर करिए थोड़ा बहुत, तो फिर सभी लेते हैं यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब लिंक्डइन पे आप देखते हो जो भी हो, लेकिन हर चीज रियल नहीं होती, राइट? इसलिए कोई नहीं, वो आपको कुछ भी डाउट होता है शोएब, यू कैन आस्क मी लेटर इन द लिंक्डइन और टेलीग्राम और व्हाट्सएप। कोई नहीं, ये मतलब सही है, आप पूछो अगर आपको डाउट है। आप Okay. आपने ऐसा बोला तो इट्स गुड, मतलब मैं भी सबको पूछता हूँ लिंक्डइन पे कि यार आप तो ऐसे बोल रहे थे क्यों नहीं, इट्स गुड कि हाँ आप पूछो, उसमें कोई बुराई तो है ना। Thanks for your time, Sagar. Thank you. ओके, थैंक यू। Bye. गणपति, uh, एनीथिंग? yeah, one last doubt I have. हम्म So since I work in the Azure stack, just I want to explore the Power BI also. But my personal interest is to work in the Tableau. हम्म। So is there any project where we have combination of Azure with the Tableau? Is there any possibility? नो नो, एजोर का मतलब टू बी ऑनेस्ट नहीं होता है, मैंने सुना नहीं है, हाँ बट द थिंग इज ना, टैबलू से यू कैन, आई मीन टैबलू में यू कैन इंपोर्ट एनी काइंड ऑफ डेटा, लाइक वी हैव हाँ मल्टीपल कनेक्टर्स, राइट? डेटाबेस का हम्म, कनेक्टर भी होगा, आई गेस सीक्वल डेटाबेस का भी होगा। तो अगर आप हाँ डंप करते हो सीक्वल डेटाबेस में तो टैबलू बना लो। बट मैंने अभी तक वैसे नहीं सुना है, बस होता है, इट्स पॉसिबल। मतलब अगर मेरे लास्ट लोग प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ था ऐसे, क्या हम्म होता था डेटाब्रिक्स का जो आउटपुट था वो एक डेल्टा टेबल में जाता था और उस टेबल से टैब्लू को कनेक्ट करते थे, तो खुद ही वो तो ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, बना। यस, एक तो वो रिपोर्टिंग टूल ही हो गया ना काइंड ऑफ। अब तो हम्म, ऐसे आप क्लिक, ये क्लिक व्यू और भी होते हैं, क्लिक लुकअप, सेंस, लुकअप, क्लिक व्यू। तो yes. वो सब यूज Quicksys कर is सकते हो। हम्म Quicksys is the advanced version of ClickView. Uh, हाँ, yeah. So तो Sarjeet, which is कनेक्टर ही है the उसमें। most which is the most used reporting tool, Sarjeet? Power BI or ClickSense or Tableau? आई गेस देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टेबलू एंड टैब्लू एंड पावर पावर बीआई बीआई, का ही चलता हाँ। कंपटीशन हमेशा। बाकी दो तो ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब लोग कम यूज करते हैं, बट टेबलू अभी तो फेमस था लास्ट ईयर तक हाँ बहुत, बट पावर बीआई भी अपना बहुत फ्यूचर ला रहा है। तो अगर आप ये ना, आप टेबलू सीख जाओगे, वही सेम ही काइंड ऑफ चीजें हैं वहाँ पे भी, तो वैसे सिंटेक्स चेंज हो गए, है ना? अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट टेक स्टैक पे जाना है, टोटली हम्म माइक्रोसॉफ्ट टेक स्टैक पे, देन यू शुड लर्न पावर बीआई। अगर आप सोचते हो कि चलो मुझे माइक्रोसॉफ्ट से हट के भी जॉब करनी है, राइट, तो आप okay तो आप ये टैबलू या दूसरी वो सीख लो ओपन सोर्स वाला। बट yeah आपको हाँ ये एक सोचना कि बार। भाई मैं एजोर का बिल्कुल मस्त मुझे आना चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट स्टिक टू पावर बीआई। okay तो माइक्रोसॉफ्ट के टेक स्टैक की तरफ जाओ, अगर जा रहे हो तो अजोर सीख रहे हो, ये सब सीख रहे हो तो पावर बीआई की हाँ साइड में जाओ, ये क्योंकि इंटर रिलेट अजोर। करने पे आपको अच्छा लगेगा, कंपनी में भी ना आप हम्म, ये बोल पाओगे कि मुझे एंड टू एंड आती हैं चीजें, तो वो हाँ बेनिफिट देगा आपको बहुत। अब आप बोलोगे मुझे दो दो चीज जीसीपी की आती हैं, तीन चीज एजोर की आती है, तो उसमें मजा नहीं देगा वो कंपनीज को, क्योंकि कंपनी ऐसे तो ना काम करती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे चार पांच चीजें तो यूज नहीं करोगे, रिसोर्सेस अलग अलग, क्या हम्म बोलते हैं, क्लाउड के, करेक्ट? हाँ यूजुअली correct एक ही यूज करा जाता है ना, सब्सक्रिप्शन एक्सेस वैक्सेस के लिए, इशू के लिए। तो इसलिए अगर आप okay बोलते हो कि भाई मुझे सब आता है या चार, तो आपका 100% मतलब चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ got it अजोर तो सिनैप्स में ना ये पावर बीआई फर्स्ट पार्टी सर्विस है, उसके अंदर ही दिखा सकते हो चार्ट्स बना के। oh, तो okay अजोर सिनैप्स जानते हो ना, कॉम्बिनेशन अजोर डेटा फैक्ट्री, डेटा हम्म ब्रेक्स, हाँ हाँ तो फायदा होगा पावर बीआई सीखो। so Sagar and Sujit, do you have any freelancing project to learn all this I mean
I want to implement end-to-end projects in Azure Stack, up to from source to data. I mean Synapse. So can I get any freelancing projects, or I will work for free Freelancing only? project free. I mean, I'm not sure if you get any freelancing project. Maybe you have to pay them some amount Oh, okay. because but they will also teach you, right? For So the sake of understanding and learn to work maybe on the Indian project. सिनैप्स रिलेटेड चाहिए क्या प्रोजेक्ट? हाँ, यूडेमी में एक इंस्ट्रक्टर है, टॉप इंस्ट्रक्टर है बहुत, ये सुना होगा इसका नाम, सागर ने भी, वो एक है ना सागर, Ekansh, एक Ekansh सेकंड याद Garg, नहीं आ रहा। someone Indian or इंडियन ही है, इंडियन ही है। Deepak? नॉट दीपक, नॉट दीपक, Ekansh Garg रमेश है। रटना स्वामी, Yes, yes, Ramesh Shatna. वो बेस्ट लगा, वो भी अच्छा है सिनैप्स सीखने के लिए। Ramesh Ratnaswamy. हाँ, Okay, रमेश रटना स्वामी, उसने अजोर डेटा फैक्ट्री भी सीखा है, डेटा ब्रिक्स भी सीखा है, और देख लो एवरेज रेटिंग 4.6 है, ठीक है, और अराउंड 9000 रेटिंग है, तो अच्छा ही होगा। Okay, Sajid. I'll check that. Thank you. Yeah, that's it from my end, Sagar. All my doubts clear. Thank you. Thanks. Hello, Pavan. Yeah, hi. I'm audible, right? Yes, you're audible. Yeah, thank you for giving this opportunity. From last 1.5 years, I'm working on related to cloud data engineering side. Now I'm exploring or upskilling my skills with a data warehouse tool like a Snowflake and Azure platform. So in the Azure side, I started with blob storage and ADF. So in my current company, their architecture data architecture plan, like they are collecting the data from different sources using ADFs, and they are maintaining the data lake and data warehouses separately. So data lake is Azure blob. Understood. Yes, understood. So and also for data lifting and movementing, that means lift and shift kind of thing. For that they are using ADF. For data transformations, they are using another tool. So they are not using a ADF, I think. So I think they are using DBT kind of thing. So in this architecture, or in this down the line, from to build the projects from the end to end. So what are the skill set I need to be get ready? That is my question. For this side, if you are good in SQL, Python, then you can create your, and as you said that, you are Azure data engineer, right? From 1.5 years, correct? Yes. So you might know about ADF, correct? You have worked on ADF part as. Yeah, I build a few pipelines. Few pipelines, right? So ho gaya na, it's simple then, right? ADF, so you just source the data from one place to another, put it over there, use some different kind of activities like for each activity, you can use some variables, you can use search activity over there, those things you do. And then once your data has been put it into a raw data lake, you can say, or the bronze layer, then on top of that, you create a mount point in Databricks. If you're using if your company is using Databricks, then do some cleansing, remove duplicates, do something like that. Whatever, change the schema if you wanna do, those things you can do. And on top of that, you can also write your dimension and fact tables, depend on your business, use case, whatever you are doing. After that, dump that data into a data warehouse, maybe, or maybe a data lake, a published data lake. You can also do that way. Yeah, in my organization, they are using Snowflake only. So they are just dumping the data, raw data into Snowflake, into raw database, and from on top of that, they are building the standardizing the column names and staging layers, and standardizing the data types. On top of that, they are building the dimensions and factors. Yes. That is also you can do. Though that Snowflake is quite
quite good nowadays. People are using it, so you can do that way also. But it's better, if you are working as a Azure data engineer, so be stick in the Azure technologies. Okay. Okay. The same thing I have also shown in my project. If you if you want to learn those skills, then you can also buy my course. Yeah, I brought it already. So what will So be the data bricks in the future? Is the technology is rapidly changing, or it is? Database will be there for some years, but maybe company will switch from Databricks because the cost of Databricks is too much. Yeah, computation cluster. So cost is too much. So maybe company they may move from Databricks to any other cloud platform in future. Though companies are preparing something right daily, they are making something new. Though from 3 years, Databricks has been improved a lot from 2.5 or 3 years. Before we do not have much features in that, but nowadays Databricks having many features. Even though you can also schedule your pipeline, create workflows, and make many things in that. It's quite good. Okay, thank you. That's it from me. And Pavan, if you already purchased it, so please go one by one, Yeah, and okay. watch all the videos. And if it is possible for you, then I would recommend that you do a practical also. I mean, create your project. Don't just watch a videos, so that you will get a better understanding or better knowledge of the tools or the method which I shown. Yeah, definitely. I will. Okay. Hey, hi Sumit. Hello Sumit. Am I audible? Yes, you are audible. No, I am audible. Sumit is. It's okay. It's live actually. Hello Sumit, are you there? Okay, I think he is busy or is not able to. Is he facing some issue? So we'll leave it then. Anything else? Ganpati, Surjit, Pavan? No, Sagar. Actually, scheduled for half an hour, but it took 1 hour. No problem. It happens. I know. Unless you have questions, you wanna talk, you can talk. If you do not have any question, we can close it. Yeah. So I don't have any questions, and thanks for your clarifications, Surjit and Sagar, both of you. Thank you, boss. Bye bye. Bye.